Electron rotating about the proton is spin. When energy is applied to the atom, either the kinetic Hello. Good afternoon everyone present here. To start with today's session, I would like to invite our speaker, Mr. Deepak Sharma sir, and chairperson, Mr. Rohan Pawar sir on the dais. Thank you sir, please have a seat. Now I request Dr. Pooja Bhosle ma'am to please felicitate the speaker with token of love.
Anuja Bhosle, ma'am, sir. Thank you, sir. I also request Dr. D.L. Atade, ma'am, to please felicitate the chairperson, Dr. Rohan Pawar, sir, with token of love. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It's a great honor for me to introduce our esteemed guest and speaker for today's workshop, Mr. Deepak Sharma, sir. Mr. Sharma, sir, is currently serving as the product manager for ICP OES, that is inductively coupled plasma optical emission spectroscopy and mass spectroscopy at Lab India Analytical Instruments Private Limited, Mumbai. With over 8 years of professional experience in spectroscopy applications and analytical instrumentations, he has built a strong expertise in providing technical solutions, product management, and application support across India. Prior to this role, he worked with Agilent Technologies India Private Limited as a field application engineer, where he provided nationwide technical support and application support for advanced analytical instrumentations. Academically, he holds a master's degree in organic chemistry from the University of Mumbai, where he secured first position during his postgraduate studies. He was ranked 14th in the aptitude test in chemistry 2009. He was ranked 14th, yes, and he has also worked with renowned organizations such as BASF India Private Limited, Chembond Chemicals Private Limited, and Jal Nidhi Bitumen Private Limited. Notably, he was selected as a government exchange student under the UK ERI scheme, which gave him the opportunity to work with the GlaxoSmithKline in the United Kingdom on projects related to HIV and hepatitis API development. Further, it's my privilege to introduce our chairperson of this session, Mr. Rohan Pawar sir, Director of RAP Analytical Research Private Limited, Nashik. Mr. Pawar sir completed his masters in pharmaceutical analysis from Sheffield Hallam University, England, where he secured the distinction of University Topper in 2012. He has been leading RAP analytical research since 2012 and has conducted research over 900 pharmaceutical APIs and their formulations. He has also guided more than 1200 master's projects and 750 PhD research works and delivered 600 plus expert talks and workshops in the field of pharmaceutical and analytical sciences. His research in finger mark profiling and in forensic science conducted in collaboration with Sheffield Hallam University was internationally recognized and appreciated by the FBI and Sheffield Police. Mr. Pawar sir, with his vast experience in analytical research, continues to inspire young researchers and professionals. Sir, I request you to please address the gathering. Good afternoon to all. First of all, I would like to thank Dr. Tambe sir for giving me this opportunity, Dr. Nehete sir, Attarde madam, all other teaching staff sitting in front of me, my dear students. This is the platform which generally what happens is like when we are at the student age, we find it quite boring, frankly speaking, because I have been there few years back, like you people only, but we never understand the importance of all such things. And obviously, when you are coming at this level, or the people who I could see, madam, you must be doing M.Pharm when we were doing B.Pharm, right? Yes. So she is one of the staff and she could understand the importance and the meaning behind these such kind of talks, and listening to the personalities like Sharma sir, and you will understand like how these things are important in your daily life professionally,
because now only when we were sitting and we were having the discussion regarding the syllabus especially, there is a still vast difference in the syllabus which we have right now and the people who are dealing with the daily challenges in the professional life and the companies. So during the research we could understand or we could see that what exactly challenges are there we are facing in the market. That is first. Second thing is that what kind of resources we could generate to overcome all the problems or the problems which are upcoming. But the students like you people are far away from the reality which is already existing in the market, because we are not coming out of those textbooks so called, right? We all are one night study public mostly, right? You are smiling, right? So am I right or not, right? Yes. So see, what happens is like we are just learning the things to get or to fill the pages. Okay, that should not be your aim. Try to understand what exactly things, and I am sure that sir will be definitely succeeding, or he will be successful in delivering the things which you want to listen. I hope you will be discussing the principles, workings, their applications, advantages, disadvantages, pros, cons, and all these things. So sir, it's all up to you now. So I hand over with the permission of the chair for this session. Please start with the session, and I hope this will be fruitful and you people will be like overwhelmingly asking your questions after completing the session. We'll discuss other things later on. Thank you for this. Okay. Hello. Could someone close the door, please? कोई बाहर नहीं जाएगा, और जो पीछे बैठे आगे आ जाओ. मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है. आओ. और आगे टीचर्स काटते नहीं है. They will pamper if you sit next to them. आ जाओ आगे आ जाओ यहाँ पे. See, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज मेरा 1 घंटे का सेशन से आप लोग सब आइंस्टाइन बन जाओगे, ठीक है? पर जो भी बोलूँगा उसमें से 10% भी आपने ग्रास्प किया तो यू विल रिमेंबर मी व्हेन यू विल बी इंटरव्यूइंग समवेयर. ओके, देयर आर क्वेश्चंस, देयर विल बी एक्सपीरियंसेस, एवरीवन टॉक्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. हमने जो कॉलेज में पढ़ा है उससे हमें इंटरव्यू में कोई हेल्प नहीं हुआ, ऑनेस्टली. I will be, क्या बोलते हैं, bluntly honest with you, because तुम लोग के जगह पे हम भी बैठे थे. तो बिफोर दैट, इंग्लिश, हिंदी, मराठी किस में चाहिए? इंग्लिश. और दूसरा भाषा? ओके. सो 10% भी आज याद रखा तो तुम्हारे काम का है. सो पे अटेंशन. आई नो यू हैड लंच, यू विल बी स्लीपी, बट what's your name, sir? श्रेयस, वो चॉकलेट से. जो भी राइट आंसर देगा, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, मैं एक तरफ बोलूंगा नहीं, तुम लोग भी बोलोगे, गलत सही कुछ भी चलेगा, ठीक है? तो जो राइट आंसर देगा वो चॉकलेट बांटने का एक वॉलंटियर दे दो, जो वहाँ चॉकलेट दे सके सबको, ठीक है? डाल लेना पूरा. So why we have gathered here? Anybody? अभी आंसर देने का. Why we have gathered here, for what session? Anybody? नहीं बोलते आपके बच्चे? कितने अच्छे हैं. आपको चिल्लाना नहीं पड़ता होगा क्लास में. रख दो, पूरा सेशन में खड़े रहेंगे ऐसे. अच्छा, मेरा नाम क्या है? अच्छा, चलो, that's good. दीपक शर्मा. And what session I will be delivering? ICP, right? कौन बोला? टीचर्स नहीं बोलोगे, आप लोग को आता है मुझे. आप लोग नहीं बोलोगे, बाकी लोग, बच्चे लोग. तुम पीछे दो वाले इधर आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ.
इनकी आंखें एकदम नशे में हो रही है, खाना इतना अच्छे से खाया इन लोगों ने, दे विल स्लीप फॉर श्योर। आगे आते हैं। ओके, सो आईसीपी क्या होता है? आईसीपी कुछ पता है? सुना है आईसीपी? मेटल सुना है? मेटल, एलिमेंट, ये सब सुना है? साइंस में हो या कॉमर्स में हो? तो हाँ ना, कुछ बोलो ना यार तुम लोग। हाउ साइलेंट यू आर। हम लोग जब भी रहते थे हमको स्पीकर बोलते थे चुप बैठो, हम लोग इतना इंटरेस्टेड रहते थे। तुम लोग का ही फायदा, मेरा भी नहीं, मैं घर जाएगा वापस। ठीक है, तो प्लीज बी अटेंटिव, बी इंटरैक्टिव। ये जो स्टेज फियर होता है ना, स्टेज फियर ऐसे ही निकलेगा। तुम लोग को आगे मैनेजर बनना है, क्या क्या बनोगे? साइंटिस्ट बनोगे, मेडिकल कोई खोलेगा, राइट? मेडिकल खोलोगे तो उसमें भी बात करना पड़ता है कस्टमर से। तो स्टार्ट टॉकिंग। दिस इज टुडेज जनरेशन, दे वोंट आस्क यू पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर, दे विल सी योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में भी गलत कितना बोलते हो वो देखेंगे। तो गलत बोलो बिंदास, टीचर्स कोई जज नहीं करने वाले, मैं जज नहीं करने वाला। आईसीपी का फुल फॉर्म पता है किसी को? हाथ ऊपर करो या बोल दो फटाक से। यस मैडम, येलो। इंडक्टिवली कपल्ड और प्लाज्मा। आगे ओईएस का ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी इंग्लिश टर्म्स है, वर्ड्स है, उससे ही समझ रहे हैं कुछ तो इंडक्टिवली यानी कुछ तो इंड्यूस किया हमने। किसके साथ कपल्ड है? प्लाज्मा के साथ कपल्ड है। ऑप्टिकल मतलब कुछ तो कांच का खेल रहेगा। कांच मतलब मिरर्स, ग्लास, ऑप्टिक्स का वर्ड लिया। तो एमिशन मतलब कुछ तो एमिट हो रहा है, और जो पूरा सेटअप है उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें वी आर डीलिंग विद लाइट। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमैटोग्राफी, वी आर डीलिंग विद सॉल्वेंट्स एंड द सेपरेशन। सो बोथ आर टेक्निक्स पैरेलली चलते हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि दीपक अभी आईसीपी पढ़ा रहा है, बट हम फार्मा के लोग हैं तो क्या ही होगा। हम लोग सुनते 2 घंटा बैठते हैं और उसके चले जाएंगे। बट यू विल, जो भी अभी सिप्ला में काम करना चाहता है, रैनबैक्सी में काम करना चाहता है, उसमें बी फार्मा, एम फार्मा सबकी एंट्रीज होती है। और एक टाइम आएगा यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग एपीआईज और व्हाटएवर द फाइनल कंपाउंड यू आर मेकिंग। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, when you go to doctor and they say your hemoglobin is less, it is around 7, so which test they do? CBC, right? But apart from CBC you get a knowledge of hemoglobin only, but hemoglobin is responsible for by which iron or which element? Iron. तो अभी वो कैसे निकालोगे? ऐसे देख के बोलोगे 5 mg आयरन है, ऐसा बोलोगे देख के टेस्ट ट्यूब में? नहीं, तो कैसे करते हैं? अच्छा, आयरन किससे निकालते हैं? एनालाइजर से? जोर से हाँ, कैसा होता होगा? ठीक है, एनीबडी एल्स कुछ पता है? आईसीपी ओईएस से एमएस से निकालते हैं ब्लड का आयरन। थायरोकेयर, रेलिकेयर, एजिलस, डॉक्टर फड़केस लैब, ये सब लोग आईसीपी यूज करते हैं ब्लड का एलिमेंट्स देखने के लिए। बहुत सारा फीवर आ रहा है, बहुत सारा अचानक उल्टी हो रहा है, बहुत सारा पेट दुख रहा है, बॉडी पूरा एक कर रहा है, तो वो किसके सिम्टम्स है? इट्स नॉट नेसेसरीली दैट यू विल हैव अ इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक विल वर्क। एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे? एलिमेंट टॉक्सिसिटी देखेंगे, मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। आज समुद्र से जो मछलियां आ रही है उसका टेस्ट कर रहे हैं। कैसे टेस्ट करते हैं टॉक्सिसिटी के लिए? आईसीपी पे। सो वी डाइजेस्ट दैट फिश and we make it in a liquid form and then we go to the ICP analysis and we conclude that it has a mercury, arsenic, lead, selenium, ये सब heavy elements है जिसके ऊपर पूरी दुनिया कायम है। ठीक है, तुम्हें BIS पता है? BIS, Bureau of Indian Standards, FSSI, AI, और कौन होता है? IS, Indian Standards, इनके सबके पेपर्स हैं फूड इंडस्ट्री पे, फार्मा इंडस्ट्री पे। तो उसमें सबके लिमिट्स रखे हुए हैं एलिमेंट्स के, मेटल्स के, ताकि आपको टॉक्सिसिटी नहीं हो।
आयरन Fe+2 Fe+3 राइट, होते ना आयरन के, क्या है ये आइसोटोप्स है, क्या है आइसोटोप आयंस है। Fe+2 लोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा, Fe+3 लोगे तो आयरन बनेगा। हाँ, फेरिक और फेरस में फर्क होता है। तो ये सब कैसे पता चलता है स्टडी से, आईसीपी से। ओके, अभी आप लोग एम फार्मा पीएचडी ये सब करने के बाद यू हैव गेन a position as a manager, and management has asked to choose an instrument. You have to buy an instrument. So what all three things you will look into an instrument? चलो फटाफट बोलो, तीन चीजें क्या देखोगे? यस सर, वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कौन सा? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा जोर से बोलना, हमारा समझ ले, गुंडा खड़ा है यहाँ, चिल्ला जोर से। सर, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ताकि हमें मतलब प्रॉफिटेबल भी लगे और कम प्राइस में भी अच्छा मिलना चाहिए। ओके, सो कंक्लूजन द कॉस्ट, वर्ड कॉस्ट। ओके, दूसरी चीज हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे रेगुलर अप्लायंसेस है या फिर डिवाइसेस है, उससे थोड़ा सा फीचर उसका अलग होना चाहिए ताकि हम उसे यूज करने वाले तो वो ऐसे यूज करें कि नहीं है तो ले लिया, ऐसा नहीं। वो लेने का कुछ मोटिव होना चाहिए कि नहीं इसमें ये यूनिक फीचर है, इससे हमें कुछ सच में वो लेने के बाद हमें कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूनिकनेस शुड बी देयर। फर्स्ट शुड बी कॉस्ट एंड यूनिकनेस, एंड थर्ड आई थिंक दैट उसके यूज से हमें रिसर्च करने में, रिसर्च इट शुड बी रिसर्च फ्रेंडली, रिसर्च करने में हेल्प आए इससे, ऐसा मुझे लगता है। Thank you, very good answers. She can be a potential employee. She is thinking as a management person. बाकी साइंटिस्ट जैसा कोई नहीं सोचेगा, ठीक है? Anybody else? She said cost. Analytical results. Analytical results, very good. So what do you mean by analytical results? Proper standard results. Sorry? Standard results. तुम लोग का आवाज क्यों ऐसा है? नाशिक में प्रॉब्लम है? Standard results. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ओके। इन अ वे, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एक दो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, एक घंटे में कर रहा और एक 5 मिनट में कर रहा, कौन सा अच्छा है? 5 मिनट वाला। 1 घंटे वाला अच्छा होता है ना, आराम करने मिलेगा। कैसे भी तुम लोग इतने अच्छे बच्चे। सर, 5 मिनट क्योंकि हमें मतलब हमारा काम जल्दी भी होना चाहिए, हमें दूसरे भी Yes, काम so that is speed of the instrument. And suppose you have done some result where you need a sample of 10 grams and and another machine does the in 0.1 mg. Which one is good? 0.1 mg. Sample एक जगह 10 ग्राम लग रहा है और एक जगह 1 mg लग रहा है, कौन सा अच्छा है? 1 mg। तो उसका मतलब सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है, किसको सेंसिटिव है? सैंपल रिजल्ट्स को, राइट? सो दीज आर 3। अब तुम मैनेजर जब भी बनो तो ये 3 चीजें ध्यान रखना है तुम्हें, सेंसिटिविटी, कॉस्ट और। चलो आगे चलते हैं। ये सबको पता है द मीनिंग और द फुल फॉर्म ऑफ आईसीपी, एंड दिस इज नॉट माता की चौकी और ज्योति, दिस इज प्लाज्मा। सो एनीबडी कैन हेल्प मी विद प्लाज्मा? व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा सुना तो है, कहाँ होता है बताओ? ब्लड में, वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये आंसर, ब्लड में होता है। और तुम लोग ये भी नहीं बोलते क्या है उसको। गिव अ 2, शी गेव लॉट ऑफ आंसर्स, 2 ही मिलेगा। हाँ बाद में भी हाँ, तो उतना ही मिलेगा, ठीक है? इधर ही बैठ जाओ मैडम आप। ये कौन है, डॉक्टर कौन है? इधर ही बैठ जाओ, सही में यू सिट हियर। Okay, so where were we? Plasma. Plasma in physical chemistry or chemistry is nothing but 4 state of matter. Okay? 4 state of matter होता है। उसमें क्या होता है? Solid, liquid, gas नहीं रहता, वो कुछ और ही रहता है। अब वो कैसे होता है बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आईसीपी में सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर समझना है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ कोई पढ़ेगा मेरे लिए? नीचे डेफिनेशन दिया है, श्रेया और जोर से।
It is an analytical technique that uses high temperature plasma to exist atoms in a sample, causing them to emit light at specific values. So it is nothing but a high temperature plasma to excite. Excite what? Element. Excite atoms in the sample. अब क्या होता है? प्लाज्मा में एलिमेंट गया, एलिमेंट लाइट एमिट करता है, वो डिटेक्टर के पास जाता है, तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एमिटेड. सिंपल है, कुछ नहीं, और सिंपल है, इतना समझ गया तो मैं सब समझेगा. एनीबॉडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? सब सही है? चले आगे. अब ये देखो एमिशन कैसा होता है, एक बार देख लेते हैं. स्पीकर किधर होता है? Emission spectrometry is based on the principle of atomic excitation. Here we see the simplest atom, hydrogen, with one proton and one electron rotating about the proton in a discrete orbit. When energy is applied to the atom, either the kinetic energy of the atom increases, or the energy is absorbed and the atom becomes excited, with the electron jumping from its ground state orbit to an orbit with a higher energy level. The atom is highly unstable in this condition, and the electron quickly returns to its ground state orbit by emitting energy in the form of electromagnetic radiation, commonly perceived as light. If the energy is high enough, the electron will leave the atom, which then becomes an ion with a net positive charge. The energy required for this process is known as the ionization potential and is different for every element. Who understood this? So हिंदी में मैं बोला आंसर, कोई प्रॉब्लेम नाही. घरी जाऊन असं बोलू नका इंग्रजी पिक्चर दाखवला आम्हाला, हो का? बोला आता काय, कुणाला काय समजलं? श्रेयस, मैडम, समझा कुछ? Okay, good. So what he was saying, there is an atom which has an electron in the valence shell. Valence shell सबको समझता है, last orbit, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें हमने एनर्जी डाला. एनर्जी डालने से क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया. एक्साइटेड स्टेट पे जाने पे वो अनस्टेबल रहता है, तो वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है. कौन? इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, तो वो कुछ एनर्जी छोड़ के जाता है. वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल. नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वो हम लोग के स्पेक्ट्रोमीटर में जाता है और हमें रिजल्ट्स देता है. Whereas if energy is too much high, then that electron doesn't return back. It becomes an ion. That becoms M plus. M is a metal ion or metal, any metal or any element. That becomes M plus. तो अभी सीधी सीधी बात है, MS सुना है? ICP MS कौन से क्लास में तुम लोग? केजी में हो क्या? इनको नहीं है सिलेबस में MS, ICP, MS ये सब. MSc में है? नहीं, फाइनल ईयर, 4th ईयर में. अच्छा, 4th ईयर. ठीक है, अगले साल आऊंगा, पूछूंगा तुमको फिर से. ठीक है. ICP MS क्या होता है? ऐसा ही स्पेक्ट्रोमीटर रहता है जिसमें मास काउंट होता है. इसमें क्या हो रहा है? लाइट एमिट का काउंट हो रहा है, वहां मास काउंट होता है. दोनों रिजल्ट सेम देते हैं. अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट है जिसमें बच्चे मुंह में लेने से उनको टॉक्सिसिटी हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोला इसका मुझे एनालिसिस करके दो. तो व्हाट आई विल डू? देयर आर 4 मेथड्स टू टेक एनी सैंपल एंड फॉर्म अ लिक्विड. सो वेरी बेसिक नीड ऑफ ICP सिस्टम, ICP, OES और MS is to make the sample into liquid form. And how to make a liquid form? क्या करोगे? पानी में मिलाओगे तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन. राइट? तुम लोग को है ना डिसोल्यूशन टॉपिक. हम लोग पेट का पूरा एनवायरनमेंट एक बाउल में बनाते हैं, राइट? वैसा ही डिसोल्यूशन होता है. अगर सैंपल मिल जाता है तो यू गो फॉर एनालिसिस. इफ नॉट, गो फॉर सेकंड मेथड, ओपन डाइजेशन.
take some acid, take sample in a beaker and boil it for some time. So what will happen? That will dissolve. If it is dissolved, go for analysis. Otherwise, third method, that is microwave digestion. Microwave digestion क्या होता है? तुम्हें कुकर पता है? घर पे देखा होगा ना? एक तो ओपन कुकिंग करते हैं और एक कुकर में करते हैं. तो उसका दोनों में मतलब क्या है? इसमें प्रेशराइज नहीं होता, इसमें प्रेशराइज होता है. तो इसमें भी माइक्रोवेव डाइजेशन में क्या होता है? हीटिंग का सोर्स माइक्रोवेव रहता है और प्रेशराइज सिस्टम रहता है, तो उससे डाइजेस्ट हो जाता है. अगर डाइजेस्ट हुआ तो एनालिसिस, नहीं तो फोर्थ मेथड एशिंग. एशिंग मतलब कोई भी सैंपल ले लो, उसे लिक्विड में इसको जला दो एट अ हायर टेम्परेचर 2000 3000 डिग्री सेल्सियस पे. क्या होगा? सब कुछ जल जाएगा. Everything will decompose from this plastic or whatever it is, and what will convert into CO2 plus H2O. Decomposition का बाय प्रोडक्ट ये रहता है CO2 H2O. और बचेगा क्या? Ash. Ash के अंदर क्या रहेगा? Element. Because you cannot destroy elements at the water, at their elemental stage. You cannot destroy them. You can react or make another compound, but you cannot destroy an atom, right? नहीं तो तुम भगवान हो जाओगे. तो दिस इज हाउ केमिस्ट्री वाइज. देखो यहाँ पे ओके, ऑन नहीं किया था, चल रहा है, ठीक है. Why it is not happening? ये इस पे टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था. Why my laser is not visible on TV? Chemistry है. It is absorbing everything, right? This is red light. Sorry, red light. वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. किससे? जो एलईडीज है यहाँ पे सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तुम हर जगह टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज ग्राउंड स्टेट एटम with the 4 electrons on the outer shell. Those when given energy goes there and one of the electron goes to the excited state, and when come back it emits the energy that is in the red, and when energy is absorbed in the green it forms that event. Okay, this is in the picture. तो अभी दोनों दिखाए, वीडियो स्लाइड अब तुमको आना चाहिए, ठीक है. ये क्या है? वेरी गुड. पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में अभी तुम देख रहे हो कुछ एलिमेंट्स कलर्ड है और कुछ व्हाइट है. ये जो व्हाइट वाले हैं ये लोग आईसीपी ओईएस में नहीं काम करते. क्यों नहीं करते? कोई अच्छा सा आंसर दे दो मुझे. चॉकलेट अभी इतना पड़ा है, मेरे को लेके जाना पड़ेगा. हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आईसीपी ओईएस में? प्लाज्मा तो है ही, बट क्या होना चाहिए? इवेंट क्या होना चाहिए? एक्साइट होना चाहिए, राइट? और एनर्जी एमिट करना चाहिए. तो ये व्हाइट वाले क्यों मैंने आउट करके रखा है? सब व्हाइट व्हाइट. Yes. So, rightly Madam mentioned, they require more energy or they do not ionize. So, अगर इनको देखेंगे, वो कौन है लास्ट वाले? Inert gases. Inert gases का क्या होता है? Inert gases do not react with anyone. They are chemically inert. They are chemically inert. तुम कुछ भी एनर्जी लगाओ, they won't react. So they are like celebrities. Right? पीरियोडिक टेबल सबको समझता है? ये समझाओ. ओके. सो दे आर सेलिब्रिटीज हियर. पीरियोडिक टेबल. और ये सब आम दुनिया हम लोग हैं. ठीक है? These are fat people and those are lean people. मतलब पतले दुबले. और ये बीच वाले सब बराबर वजन है इनका, बट इनकी किसी को बाइसेप बनाना है, किसी को सिक्स पैक बनाना है. तो अभी इनमें मेरा मतलब क्या बताने का? ये मोटे हैं तो इनको पतला होना है किसके जैसे? वो सेलिब्रिटीज के जैसे. तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे. ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे. तो लिथियम किसके जैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन देके कौन है वो? He क्या है? हीलियम. तो बन गया हीरो.
पोटेशियम 19, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो आर्गन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन गया हीरोइन। तो अभी इसमें क्या मतलब है, ये जो मोटे लोग हैं, सॉरी फॉर दैट body shaming and all this, but for chemistry I am telling you this, I am also mota, so these are the, ये दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कौन है ये 12, कितना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नियॉन बन जाएगा 2, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब तू वहां पे चलते हैं, पतले लोग हैं, ये लोग पतले लोग हैं, राइट, ये लोग इलेक्ट्रॉन पतले तो वजन खाएंगे, राइट, कुछ मोटा होने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, नियॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिहेवियर ऐसा है, आज खाते हैं मोटे हो जाते हैं पर परसों पतले हो जाते हैं, तो ये मेटलॉइड्स है, कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं कभी इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर मेटलॉइड्स। दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these are transition elements, they give out selective electrons like iron Fe+2, Fe+3, cobalt CO+2, CO+3, CO+7, chromium, किधर है chromium, किसको दिख रहा है 24, very good, chromium, क्या K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, राइट, Cr का कितना बैलेंस है उसमें, ठीक ना, 6, वेरी गुड, 6, इसमें 2 भी आता है 1 भी आता है, ठीक है। तो ये लोग स्पेसिफिक लोकेशंस पे काम करते हैं और फिर उसके बाद रिएक्ट करते हैं। अब ये लोग कौन है, ये आम दुनिया में आईफोन वाले बच्चे, घमंडी बच्चे जो किसी से बात नहीं करते, नॉर्मल दुनिया से बात नहीं करते, वो आईफोन वाले से बात करेंगे। तो ये लोग कौन है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ठीक है, ये लोग बहुत हाई रिएक्शन, हाई एनर्जीज पे ही रिएक्ट करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो आपको टॉक्सिसिटी देता है फार्मा में, आपका जैसे टैबलेट है, पैरासीटामोल है, लेम्यूडीन है, और कौन सी दवाई के नाम बताऊं, क्लोनाज़ेपाम है, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें अगर टॉक्सिसिटी आई तो पेशेंट का जो बीमारी है वो तो नहीं जाएगा, दूसरा और एक बीमारी आएगा, तो वो सब चेक करना पड़ता है हर चीज को। एक्टिनाइड्स, ये सब जो भी वाइट है, either they cannot knock out electron, or they are naturally not abundant, they are man-made, they are not stable in reality, or they cannot be made in solution form. That's why these are not able to be analyzed. तो ये मेरा ही नहीं, ICP और लैब इंडिया का ही नहीं, कोई भी वर्ल्ड में ICP होगा ये एलिमेंट्स नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं होगा, कोई 2 आंसर बताओ मुझे, उस तरफ से कोई नहीं बोला, सोनिया है सब लोग। Why white cannot be analyzed on ICP OES? They can't be converted to solution form. Solution form, anything else? Not abundant enough to. Not abundant, available abundantly in nature. उधर ही रख दो ना, उधर ही रख दो, लोग पास देते रहेंगे एक दूसरे को, ठीक है। So anybody else? देखो चॉकलेट मिल रहा है आंसर बोलने पे, गलत ही गलत, सही। हाँ तुम दोनों बोलो, लास्ट बेंचर दिया, क्या और 2 आंसर मैंने बोले थे, नॉट abundantly available और not able to form a solution form, और तुम दोनों भी ध्यान दे रहे हैं, yes, requires more energy to emit, and what else? चॉकलेट दूर जाने से तेरे को अच्छा है। और एक और आंसर बचा है, हाँ यस, मोर एनर्जी उसने बोल दिया, और दे आर मैन मेड और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड in lab, and when once they are made they become unstable with the environment, so they cannot be formed in a liquid form, okay.
तो ये सब एलिमेंट्स हम लोग आईसीपी में कर सकते हैं, टोटल 72 एलिमेंट्स आईसीपी ओईएस में कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपको, अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सबने सुना है? उसके अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एएएस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अभी तीनों में फटाफट देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, किसके हेल्प से? जो लैंप रहता है उसकी एनर्जी से। बट हमें वो नहीं करना, तो हमें ऑप्टिकल एमिशन में क्या करना है? वी हैव टू excite the electron in the plasma, that is one of the kind of energy, okay? And how is plasma created? वो बताएंगे, ठीक है? फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में the energy is too high that electron knocks out and that doesn't come back to the ground state and that forms a ion or cation or anion. अच्छा, cation क्या होता है? Positive. anion M0 न्यूट्रल। तो हर चीज का डिफिकल्ट आंसर नहीं होता, ये इंटरव्यूज में होता है। हम लोग को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग बहुत हाई फाई आंसर देने का सोचते हैं और गलत बोल के आते हैं। अभी सिंपल मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था एक इंटरव्यू में, व्हाई रिएक्शन हैपेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो मैंने क्या क्या बोला? मैंने एनर्जी बोला, मैंने कैटलिस्ट बोला। बोलता वो तो सब डाला हुआ है, but that is not responsible for a reaction to happen. Then what is responsible? Anybody? दूसरे बोलो। To obtain product. Of course, we are mixing for that only. But why it is happening? Yes, madam. They are not inert or stable. अगर वो stable होते तो react ही नहीं होते। Right. ये तो पता है मुझे। अभी मैं पानी ये क्या बोलते हैं, दूध और पानी को मिलाऊं, सॉरी दूध नहीं, घी और पानी या तेल या पानी को कितना भी मिलाऊं, आई विल नॉट गेट एनी एक्स प्रोडक्ट, राइट? दैट आई नो। बट पानी नमक को मिलाऊंगा तो मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। बट व्हाई क्यों होता है ये सब बताओ। हाँ, यस, टू बिकम स्टेबल, वेरी गुड। टू बिकम स्टेबल। अभी ये सारी दुनिया जो हमने देखी वो सब क्यों रिएक्ट होते हैं? ताकि वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले पाए, तभी वो लोग इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं। सर तो रिएक्शन, हाँ मैं यही बोल रही हूँ। यही बोला, चॉकलेट। ठीक है, तो उसके आगे एक और आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी बनता है। कोलिशन क्या होता है? जब वो एक दूसरे को टकराते हैं, तो कोलिशन नहीं रहेगा रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके कोलिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे बेसिक चीज जो नहीं सोचते हम लोग, स्टरर लगाते हैं। वो स्टरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिएक्शन, नॉट योर कैटलिस्ट और एनीथिंग। कुछ भी कर लो तुम, डाल के कितना 2 साल भी रख दो, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुमने, ये आंसर होना चाहिए था। पर मैंने क्या क्या बोला? मैंने कैटलिस्ट बोला, -78, 80 डिग्री सब बोल दिया, फिर भी वो सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने राइट आंसर नहीं बोला। एंड दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, दैट वी डोंट नो द फंडामेंटल्स। सो स्टरिंग, दैट इज कोलिशन, इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? यस, एनी गैसेस? मुझे टाइम हो तब बता देना, मैं स्पीड अप कर लूंगा। प्लाज्मा, वेरी गुड। प्लाज्मा, इसमें अगर आप देखोगे, you will see this is the plasma, the black one with the yellow core, and this is the RF coil, this is torch। ये 4 चीजें होती है। टॉर्च के ऊपर प्लाज्मा कैसे जलता है? गैस से। कौन से गैस से? किसको पता है? आर्गन गैस लिखा हुआ है ना यहाँ? नहीं, वेरी गुड। सो आरएफ फील्ड क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, वेरी गुड।
So what happened when you give power to this RF coil, that forms the electromagnetic field. And when argon gas is inserted, that argon gas interact with electromagnetic field. Okay, and due to electromagnetic field, and one discharge is given, electric discharge is given, and that knockouts one argon electron. And वो एक बोलते हैं ना, एक प्याज पूरे फसल को खराब कर देता है, राइट? जैसे टीचर्स लोग क्लास में जो मस्ती करता है उससे बोलते हैं ना, है क्या कोई यहाँ पे? है मैडम? सब वैसे हैं अच्छे बच्चे? क्या बात है, तुम लोग का तारीफ हो रहा है यहाँ पे। तो वो प्यास कौन है? वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो जाके सबसे कोलाइड होता है और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और वो अनस्टेबिलिटी के कारण हमें क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अंडरस्टूड? और ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हें प्लाज्मा में? गूगल इट, ओके? इसमें इतना क्यों? अब यहाँ पे प्लाज्मा में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा किससे चलता है? आर्गन से। बट प्लाज्मा हैव अ टेम्परेचर ऑफ 10,000 डिग्री केल्विन। कोई बता सकता है डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 10,000 डिग्री केल्विन कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? -273 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, तो क्या बनेगा तुम्हारा? डिग्री सेल्सियस। यानी 9,007 something will be your temperature. That is enough hot. So that temperature excites the electron. Okay, but you can see there are the quartz part. Quartz क्या होता है? ग्लास टाइप फॉर्म होता है जिसमें एल्यूमिना रहता है। अभी इसमें क्या होता है? 10,000 डिग्री पे कोई कांच की चीज पिघलनी चाहिए, राइट? और ये जो इंजेक्टर है, ये अंदर जो ये ट्यूब सा है उसे इंजेक्टर बोलते हैं, वो भी पिघलना चाहिए। तो हम लोग इसको बचाएं कैसे? तो हम लोग दो गैसेस डालते हैं। कूलेंट गैस जो टॉर्च के बॉल्स को ठंडा रखता है जिससे वो प्लाज्मा मेल्ट नहीं कर पाता, और दूसरा ऑक्सिलरी गैस जो इंजेक्टर और प्लाज्मा के बीच में गैप रखता है। तो उससे क्या होता है? हमारा कुछ भी मेल्ट नहीं होता, सब चीज चालू रहता है। प्लाज्मा गैस, ऑक्सिलरी गैस and coolant gas are the three gases which are required for successful plasma. अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे एक ही गैस 4 जगहों पे जा रहा है, राइट? तो अब इसका मतलब क्या है? हमारा जैसे ये नर्व्स है, नर्व्स एक ही रहता है, जैसे वेन्स में एओर्टा और कौन सा वेन? वेना कावा। ये दो मेन अपने बड़े बड़े आर्टरीज है, और ये आर्टरीज छोटे छोटे आर्टरीज अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। उससे क्या होता है? अलग अलग जगहों पे ब्लड पहुंचता है अलग अलग अमाउंट में। सो दैट इज हाउ द अलग अलग गैसेस रीचेस टू द सिस्टम, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय MFC, मास फ्लो कंट्रोलर। वो एक सिस्टम रहता है जो गैसेस को 4 जगहों पे भेजता है, अलग अमाउंट में, अलग प्रेशर। ठीक है? कुछ इस तरह से होता है टॉर्च में। पहले डिसॉल्वेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, और एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड एमिशन। ये सारा काम एक साथ होता है विद इन 30 सेकेंड, नॉट इवन 30 सेकेंड, 5-10 सेकेंड में सब काम हो जाता है, और आपको रिजल्ट 1 मिनट के अंदर मिल जाता है रिजल्ट के लिए। ठीक है? 4 मेथड जो लिक्विड्स को कोई भी सैंपल को लिक्विड बनाना, फटाक से बताओ मुझे। उस साइड से, नोबडी फ्रॉम हियर। यस मैडम, वो साइड। एनी like 4 methods I just told you that you have to convert any sample to liquid form. Yes. मराठी में बोलो। Yes मैडम। गाना बोलो। उस समय Resolution. Digestion pH में dissolve करते हैं।
Microwave. और एश Ash, very good. 4 chocolates. So, open digestion, dissolution, microwave digestion, ashing. ये सब 4 चीजों से हम लिक्विड बना सकते हैं और वो ये ट्यूब से इधर आएगा और ये इसमें प्लाज्मा में जाएगा और ये प्लाज्मा से लाइट होती है, वो हमें एमिट करेगी। अब ये सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम होता है। अभी हम 2 मिनट में कनेक्ट करते हैं किसी से, तो आप लोग लाइव ये देख सकते हो, अपना हमारा इंस्ट्रूमेंट लाइव देख सकते हो। तो टेक अ ब्रेक, एक दूसरे से बात कर लो। हाँ मैडम, वो लाइट कर रही है ना, एक कॉल में कर। Okay, meanwhile she is getting ready for that video. Let's go back to our slides. Sample introduction system. अब उसमें 3 चीजें आती है, पैरास्टेटिक पंप, स्प्रे चेम्बर नेबुलाइजर और टॉर्च। क्या क्या? अब उससे क्या होता है? पैरास्टेटिक पंप क्या होता है? ध्यान देते, ट्यूबिंग होती है रबर की, उस पे ऐसे प्रेस होता है, तो जब भी प्रेस होता है तो आगे का एयर चला जाता है, पीछे वैक्यूम रहता है, तो वो लिक्विड सक करता है और फिर वो ये रोलर से लिक्विड को आगे भेजता है, आगे जाके नेबुलाइजर में आता है। नेबुलाइजर हैविंग आर्गन गैस, सो नेबुलाइजर गैस, सो ये दोनों मिलते हैं और परफ्यूम जैसा मिस्ट बनाते हैं। वो मिस्ट को केमिस्ट्री में बोलते हैं एरोसोल्स। क्या बोलते हैं? एरोसोल्स। वो एरोसोल्स स्प्रे चेम्बर के थ्रू टॉर्च में जाते हैं। टॉर्च में हम लोग ने वो देखा था, क्या देखा था? इंजेक्टर, राइट? कहाँ गया था? इंजेक्टर देखा था, ये वाला। ये स्प्रे चेम्बर को कनेक्टेड है, ये स्प्रे चेम्बर से एरोसोल्स को ऊपर लेके जाता है। जो लाइटर पार्टिकल्स है वो प्लाज्मा में जाएंगे, जो हेवर पार्टिकल्स है वो ड्रेन में जाएंगे। ठीक है, तो ये सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। यही सारे मिस्टेक्स होते हैं, यही सारे गलत रिजल्ट आते हैं। अगर ये प्रॉपरली क्लीन नहीं रहा तो मेमोरी इफेक्ट होता है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड और बाकी एलिमेंट्स के भी होते हैं, बट हैवी एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा मेमोरी इफेक्ट होता है। मेमोरी इफेक्ट क्या होता है कि आपने कोई रिएक्शन किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, एनालिसिस किया और आपने क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया, तो उसके वॉल्स पे वो एलिमेंट्स रह चुके हैं और जब आप नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं तो वो उसके साथ चला जाता है। ओके, दूसरा, अगर ट्यूबिंग्स आपकी फ्लैट हो चुकी है, बहुत यूज हो चुकी है, तो वो बराबर नहीं देगा। पल्सेशन बोलते हैं ना, आपका घर पे पाइप देखा होगा, कभी पानी जाता है, प्रेशर कम होता है तो रुक रुक के जाता है, उसे बोलते हैं पल्सेशन। वो पल्सेशन यहाँ पे आता है। दूसरा, अगर आपकी आर्गन गैस प्योर नहीं रहेगी तो आपका प्लाज्मा फ्लिकर करेगा, वो प्लाज्मा फ्लिकर करेगा तो आपके रिजल्ट्स गलत आएंगे। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए हमें प्योर प्लाज्मा आर्गन चाहिए, 99.999% प्योर गैस। कभी कभी प्लाज्मा नहीं चलता, लोग हमें फोन करते हैं, मतलब सर्विस इंजीनियर को फोन करते हैं, तो हम लोग जाके देखा है मैंने कई जगहों पे, तो आर्गन गया और मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं ऑन हो रहा, तो उसके बाद मैं जस्ट जाता हूँ, सिलेंडर चेंज करता हूँ और मेरा प्लाज्मा ऑन हो जाता है। मतलब आपके इस टाइम में भी प्योरिटी का विश्वास नहीं है, उसमें इम्प्योर मॉइस्चर या मीथेन, इथेन, ये सब गैसेस मिक्स होके आते हैं, इससे प्लाज्मा नहीं जलता। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ दिस थिंग। लेट्स सी, वी विल सी आवर लाइव इंस्ट्रूमेंट। Okay, so
So we have Akshada. Sorry. अक्षदा आपका वीडियो नहीं दिख रहा यस यस एक सेकंड So this is the instrument. मेरे चेहरे को कट कर दो अक्षरा. Okay, so this is the main unit of the instrument. This is peristaltic pump. This is spray chamber, nebulizer, and the torch. Could you open the torch box, please, Akshada? Okay, she is Snehal, not Akshada. So this is the torch. You can see this is RF coil, and this is where you can mount your torch. Okay, this is spray chamber again, and these are the tubings. This is going to drain. That is PC, and this side. Could you tilt your camera towards chiller side, please? This is chiller. Okay, and exhaust, please. And thus any ICP will require an exhaust system. Once this is exhaust on the torch, so when you have any toxic elements evaporating, when they are released in environment, they will be toxic for living organism. So they will be exhausted outside. Okay. So this is the instrument. This whole portion is sample introduction system. Here is the MFC. This is optics chamber. Back side is the electronics. So this is the thumb jump. You don't need to have lot of space. You don't need lot of attachments. The main unit, chiller, computer, and exhaust. This is the setup of the ICP OES system. Any questions right now with these instruments? I cannot open the instrument and show you the circuit and everything. Okay. Okay, Akshada, thank you. Is it fine? We are asked to go. Thank you, Akshada. Snehal. So sample introduction system again, which all components come in that. हम लोग चीटिंग भी नहीं कर सकते ना? इंडक्शन कॉइल सारे हाँ? Torch. Okay. Torch, spray chamber, nebulizer, and parasitic tube. मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ. If you get this question in an interview and they ask what could be the problem in ICP OES system or ICP MS, where your results can go wrong. Either your user had made wrong solutions, right? उधर तो एक प्रॉब्लम होता ही है. तो वो अगर अच्छा है उसका छोड़ दो. तो अब प्रॉब्लम्स कहाँ होंगे? प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं होता. ये सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम में होता है. और ये 4 दे दिए तो वो तुम्हारा फैन हो जाएगा और तुम सिलेक्ट हो जाओगे. ठीक है? अभी इंटरव्यू. Okay, so this is the real plasma. ऐसा दिखता है plasma, and this is torch, this is injector, and you can see this is cut here. This is called tail. Tail of plasma is being cut. अभी अगर आप देखो तो यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर अलग अलग होंगे, राइट? अगर एक फ्लेम को इमेजिन करो, फ्लेम को हम लोग जब भी शेकुटी करते हैं, राइट, तो हम लोग क्या उसके अंदर हाथ नहीं डालते, हम लोग ऊपर से करते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर इज लोअर ऑन द एज ऑफ द फ्लेम. इट विल बी नॉट हायर ऑन द एजेस. सो सेम वे इफ योर सैंपल कम्स and get ionized here, here or here,
so you will get wrong results. So what we want everything to be analyzed or ionized here. So this is called NAZ. What is called NAZ? Normal analytical zone, where everything should be analyzed. That's why we cut that tail. If anything is ionizing on the tail, it won't go inside the detector to get or analyze the results. Okay? So 10,000 Kelvin is the hottest point, and that will be the core of the plasma. Okay, and the core is this whitish part, the pale white part. The bluer parts are useless for us, they are not good for us. NAZ अभी जो हमने बात की, NAZ अभी यहाँ पे देख रहे हो दो पॉइंट्स है, एक्सियल और रेडियल, दो व्यू है, राइट? दो व्यू है. अगर आप ऐसे लाइट के सामने करते हो राइट डायरेक्ट, तो इसमें ज्यादा लाइट है, और अगर ऐसे करता हूं तो कम लाइट है, तुम लोग का ज्यादा लाइट है. देखो इसमें ये देख रहे हो, बहुत ज्यादा लाइट मेरे डायरेक्ट हैंड पे पड़ रहा है, पर इधर कम पड़ रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन सैंपल का ज्यादा हो तो हमें रेडियल लेना चाहिए, यानी सामने से नहीं लेना चाहिए, बाजू से लेना चाहिए, तो कम लाइट गिरेगा. क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ज्यादा लाइट होगा, ज्यादा लाइट होगा, आपका डिटेक्टर सैचुरेट होगा. हम लोग जब when we step out from a dark room, our eyes closes. Why it closes? Because too much of light has reached cornea, and cornea works as a detector, and that shut down immediately because too much of light has saturated the cornea. That's why we step out and close our eyes for a second. Same way, if we send a lot of light on the detector, it will saturate and it will give a wrong result. इसमें पेन है श्रेयस लिखने का? उसको इधर लिखना है. Okay, so when you have a saturated system or a peak, it will be like this. It is saturated peak. When you have a good peak, it should look like this. Okay? और जो मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा था, जो प्रॉब्लम देते हैं, वो कुछ इंटरफेरेंस ऐसे होते हैं. दो पीक एक के ऊपर रखाते हैं, तो उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं. ये और ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए. तो axial radial, जब when concentration is low, you should go for axial mode, and when the concentration is too high, then you go for a radial. So there are radial and axial view, and combined in an instrument is called dual view. So the market gives you option of axial instrument, radial axial option, and dual view. So a Lab India has dual view, that is ICP 5000 DV. Okay, and NAZ, you can see that the NAZ in this portion. This is the X-ray of that instrument just you saw. Okay, very important topic you should understand. तुमने वर्ड सुना ट्रू साइमल्टेनियस कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में? मैडम आप लोग ने तो सुना होगा. ICP और AS में बोलते हैं ट्रू साइमल्टेनियस होना चाहिए.
but there is one more word that is called synchronous, ट्रू साइमल्टेनियस सिंक्रोनस। ये दो वर्ड होते हैं ताकि एक इंस्ट्रूमेंट को बहुत बेहतर बनाते हैं। वो कैसे देखते हैं। आपका स्प्रे चेंबर से गया प्लाज्मा में, लाइट गया एक्चुअली या रेडियली, दोनों जाता है मिरर्स पे, मिरर के थ्रू स्लिट में, फिर एक और मिरर में जाता है और फिर वो जाता है पॉलीक्रोमैटर में। पॉलीक्रोमैटर क्या है? एक ग्रेटिंग। ग्रेटिंग इज लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म व्हाट इट डज विद द लाइट, इट सेग्रीगेट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स। ओके, किस कोई लाइव एग्जांपल बताओ प्रिज्म का। सबने देखा है प्रिज्म लाइव हाँ? वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गया? कलाइडोस्कोप। हाँ? कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप। कुछ थोड़ा नीचे धरती पे धरती का सादा वो चीज। स्कूल में रेनबो। बताते थे। रेनबो। हाँ, वो रियल है। तू तो स्कोप की बात कर रही थी, मैं सादा रेनबो की बात कर रहा था। रेनबो से क्या होता है, जब धूप और बारिश में एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट से लाइट जाती है तो प्रिज्म बनती है और हमें रेनबो मिलता है। दैट इज हाउ दिस इज पॉलीक्रोमैटर वर्क्स। Polychromator works, and that polychromator, when all light falls together on polychromator, is called true simultaneous. If it is falling one by one, then it is called sequential. Okay, and that light goes to detector एक साथ, then it is called synchronous, and different it is called sequential. तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? True simultaneous synchronous. ओके, जब सारी लाइट एक साथ सब चीजों पे गिरे। अब इसमें सब लाइट गिरे एक साथ मतलब क्या है? आपका इसमें अगर देखते हैं तो आपकी रेंज होती है 165 टू 900 नैनोमीटर। इसमें यूवी रेंज कहां तक होगा? 165 टू 350 और 350 टू 900 इज विजिबल रेंज। सो व्हेन यू सेग्रीगेट द लाइट you will get 165 to 900 different colors and different wavelengths, and if they are falling together then it is called true simultaneous synchronous. But if it is falling UV then visible, then it is called sequential. Okay, understood? Next is, ये सबको समझा? आपको मोस्टली 167 टू 785 नैनोमीटर्स मार्केट में मिलेगा। 900 का फायदा क्या है? अभी जो मैंने दिखाया था आपको इंटरफेरेंस, वो उसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी लाइन पे इंटरफेरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी लाइन यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट? तो दूसरे ऑर्बिट से निकलता है, तीसरे ऑर्बिट से भी निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, टर्शियरी लाइन। ये लाइंस अलग अलग होते हैं और वो लाइंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी लाइन पे इंटरफेरेंस है तो हम सेकेंडरी लाइन यूज कर सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स है जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, सीशियम, ये सब प्राइमरी लाइन पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको 800 के अबव यूज करते हैं और 800 में हमें प्रोमिनेंट एमिशंस मिलते हैं और हम लोग को इंटरफेरेंस नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई 900 तक का रेंज मिलना फायदेमंद होता है। ठीक है, देन वी हैव यूनिक डिमाउंटेबल टॉर्च। उसका मतलब क्या होता है? टॉर्च पहले के जमाने में कैसे आते थे, कोई इंस्ट्रूमेंट को टॉर्च यानी फिक्स रहते थे, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। पर इसमें कैसे सिर्फ सर्कल ऐसा स्क्रू जैसा घुमाने का, टॉर्च निकालने का, क्लीन करके वापस लगा सकते हैं। अब एक और फायदा क्या है, जो आपने इंजेक्टर देखा सब लोग ने, वो छोटा ग्लास ट्यूब, वो ट्यूब अगर आप चेंज करते हो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए तो आपको अलग अलग टॉर्च लेना पड़ता है। बट यहाँ सिर्फ इंजेक्टर चेंज करना पड़ता है, टॉर्च नहीं चेंज करना पड़ता, तो उससे आपके पैसे बचते हैं। ये बताना पड़ेगा। ठीक है, एमएफसी हमने बात की थी, मास फ्लो कंट्रोलर, जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस एट डिफरेंट प्रेशर इज सेंट टू द इंस्ट्रूमेंट एंड टॉर्च, राइट? आरएफ जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट। आरएफ जनरेटर कहाँ यूज होता है हमारा? इधर बोल शायद बराबर बोल रहा। For power supply. For Power supply. for power supply to whom?
torch, so it can ignite plasma. So RF generator is responsible for power supply to the coil, and that in hand creates RF field, that is electromagnetic field, and that field, when electron is knocked out from an argon element or argon atom, that leads to plasma creation or ignition. Okay? So what is the power supply here? 500 to 1600 watts. अब इसका मतलब आप लोग को ज़्यादा नहीं समझ रहा, मुझे मालूम है, मुंह सबका देख रहा हूँ मैं, एकदम ब्लैंक जा चुका है। तो इसमें कुछ नहीं है, 500 और 1600 वॉट दे के रखा है, उसमें कम, जैसे वाटर जैसा सैंपल रहेगा तो आप कम एनर्जी में करो, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल या आयुर्वेदिक सैंपल ये सब रहेंगे तो 1600 पे करो, ठीक है। 10% TDS, TDS सबको मालूम है? TDS टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट, एक एग्जांपल बताओ। सी वाटर, समुद्र का पानी, हाई TDS, ठीक है। दूसरा है ड्राइंग सॉल्यूशन, राइट, और तीसरा है ORS। जब एक पैकेट डालते हो हेजी हो जाता है, पर दूसरा पैकेट डालते हो सैचुरेट हो जाता है, उसे हाई TDS वाटर कहते हैं। तो जब अगर आप लोग धीरे धीरे काम करोगे इसमें, तो आप लोगों को पता चलेगा हाई TDS इंस्ट्रूमेंट्स को कितना प्रॉब्लम देता है। तो वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चोक हो जाते हैं और काम नहीं करते, बट ये इंस्ट्रूमेंट इज सो केपेबल दैट इट कैन वर्क अप टू 10% ऑफ TDS सैंपल्स। ओके, CCD is very important. Since I started my presentation, I said word detector many times, right? Detectors, I use the word detector. The detector here is CCD, that is called charge coupled device. आप लोग को इसके पता इन डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए CCD? Yes? Google it. It's not physics class. Okay? CCD is the detector. It's like a camera. It captures the light, okay, and gives us the result at different wavelengths. So CCD is the biggest in the market for this instrument, and it has this size of 24 into 24 micrometer, and it has a -5 degrees Celsius cooling temperature, which is comparable to market में -45 होता है, हम लोग -5 दे रहे हैं। उससे फायदा क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट वार्म अप जल्दी होता है, इसमें 5 मिनट लगता है, उसमें 30 मिनट लगता है। तो ये डिटेक्टर्स का कंपैरिजन है, यही इसमें बताते हैं हम लोग, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। लेट्स गो अहेड। ये MFC है जो मैंने अभी बताया था। MFC ये ऑप्टिक्स चेंबर जो पूरा है, ये आपका सैंपल इंट्रोडक्शन, और पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंबर है। कोई डाउट है यहाँ पे? ये कंपैरिजन है, अलग अलग इसके बारे में, CCDs के बारे में, अलग अलग ब्रांड्स के CCD है। तो इसमें कंपैरिजन बताया कि सबसे बड़ा हमारा है। उससे क्या होता है, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा और ज्यादा तुम्हें रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलेंगे। वो होता है ऑप्टिक्स चेंबर। जब उसको सेग्रीगेट करेंगे तो कुछ इस तरह दिखता है, लाइट्स इस तरह से इसका ट्रैवल करती हैं। CCD कुछ इस तरह दिखता है, इसमें लाइंस होते हैं, अलग अलग लाइंस होते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, अलग अलग उनका पिक्चर्स हैं। जो लाइट एमिट हुई है वो ब्लैक कलर के स्पॉट पे जाती है, और वो उसकी स्पेसिफिक लाइन रहती है, उससे वो कैलिब्रेट करता है। So that's it from my side. Any questions? Any questions in ICP OES? नहीं? Before time. How much quantity? Yeah. So there are. Madam asked me question for how much quantity is required of sample. So very first thing. This पैरासिटिक पंप, अगर आप इसका पाइप इतना बड़ा रखोगे या इतना रखोगे तो उस हिसाब से लिक्विड का कंजम्पशन होगा। तो आप जैसे इसके बीच का पाइप
छोटा रख रहे हो और इधर से छोटा रख रहे हो तो 30 सेकंड में भी चला जाता है, तो लेस देन 2 ml से भी कम लगता है। और अगर पाइप ज्यादा लंबे रखते हो, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट वहाँ है और वर्किंग एरिया यहाँ है, तो पाइप लंबा होने से आपको लिक्विड ज्यादा लगेगा। और उसके बाद आर्गन गैसेस का जरूरत होता है 12 लीटर पर मिनट, 12 लीटर पर मिनट प्लाज्मा के लिए, बाकी सब 0.1 और 7 ml पर मिनट लगता है। अभी आपको बोलोगे, किसी ने सिलेंडर देखे आर्गन के ऑक्सीजन के, देखा है? तो उसमें कितना लिखा है कभी देखना, तुम लोग सिलेंडर देखोगे तो उस पे लिखा रहेगा 11.5 kg ऑफ आर्गन इज इनसाइड दैट थिंग। तो ये मेरे कस्टमर ने पूछा था, दीपक आप बोल रहे 12 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में मेरा पूरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, द आर्गन डेंसिटी इज डिफरेंट। तो 11.5 kg means 6400 liters of gas is inside that cylinder. So it's a compressed gas. तो 6400 लीटर गैस आर्गन की उसमें है। तो अब you do the maths, how much days you can work with that. So it goes up to 1 week. So less consumption of argon in this machine leads to lot of working days. Okay? Yes, madam. Anybody else? Questions? What about the concentration range which we can analyze? Yes. So very important question which I didn't tell you. I was hoping somebody asked me this question. So AS में जब आप काम करते हो तो आप ppm levels पे काम करते हो. ICP-OES में काम करते हो ppm to ppb level. And when you work in MS, then you go from ppm to ppt level. So आप जो ppb बोल रहे हो, ppb सब ppb में जाता है, डिफरेंट LODs है। अगर हम देखते हैं डिफरेंट LODs, ये LODs है डिफरेंट। लिथियम का 0.08, बेरिलियम का 0.06, बोरॉन का 2 एंड सो ऑन। डिफरेंट एलिमेंट का सबका अलग अलग वैल्यूज रहेगा। तो ऑलमोस्ट सभी पीपीबीज लेवल 10 पीपीबीज के नीचे चले जाते हैं, कुछ 1 पीपीबी के नीचे भी चले जाते हैं। और आपको मालूम है, आप फार्मा में जब काम करते हो तो आपका पूरा जिंदगी पीपीबी के अराउंड ही रहता है या पीपीटी के अराउंड। पीपीएम में कुछ खेल नहीं होता तुम लोगों का, नहीं तो आदमी मर जाएगा दवाई खा के, राइट? तो कोई भी इम्प्योरिटीज पीपीटी लेवल या पीपीपी लेवल में चलेगी, पीपीएम में नहीं चलेगी। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? एक ड्रग में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आप रन कर सकते हैं? Yes, that's a very good question again. There are two scenarios. Once you do manually, when you don't have another thing, so एक करने का आप लगाते जाएगा। जब तक आपका कंटिन्यू चलता है एक सिलेंडर चलता है 8 से 10 घंटा। जैसे आपने सुबह 9 बजे चालू किया तो रात शाम के 5 बजे तक चलेगा, ठीक है? तो आप कंटिन्यू एनालिसिस करते जाओ। तो आप सिर्फ आपके अगर मैनुअली कर रहे हो तो आप में इतना पावर रहना चाहिए कि आप 9 से 5 तक सॉल्यूशन बदलते रहो। दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो सैम्पलर। ऑटो सैम्पलर क्या होता है? 240 सैंपल्स का ट्रे रहता है, उसमें सब सैंपल लगा दो और चले जाओ, वो ऑटोमेटिकली सारे सैंपल्स करते रहेगा। और उसमें एक ऑप्शन भी है, व्हेन सैंपल इज डन, टर्न ऑफ द प्लाज्मा, सो इट विल कंप्लीट द 240 सैंपल्स एंड टर्न ऑफ द प्लाज्मा। So this is how it works. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सैंपल में कितने एलिमेंट्स है, Okay. अगर 10 है, 12 है, 13 है, ऐसे कितने मैक्सिमम कितने? Up to 72 elements you can do in single run. सिंगल। It means whole periodic table you can run. Anybody else? Last benchers? और ऑर्गेनिक सैंपल कैसे हैं? ऑर्गेनिक सैंपल्स भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक सैंपल में क्या होता है? टिश्यू सैंपल है, कोई भी सैंपल एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, एवरीथिंग। आप वुड ले लो, मच्छी ले लो, पेपर ले लो, प्लास्टिक कुछ भी ले लो, उसको लिक्विड फॉर्म में लाओ। अगर मच्छी का सैंपल लेना है, हाँ, मच्छी का लोगे, थोड़ा सा 0.1 ग्राम एसिड में डालोगे HNO3 और HCl डालोगे 1 ml,
वो दोनों डाल के माइक्रोवेव डाइजेस्टर या उसमें ओपन डाइजेशन में डाइजेस्ट करो, वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और फिर उसके अंदर पानी डालो और अपना काम एनालिसिस। सिर्फ ऑर्गेनिक है जिसको हम लोग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाना पड़ता है। तो जैसे आपका इंजन ऑयल है, उसमें हमें वेयर टेयर देखना है, तो अभी वो ऑयल को मैं मिलाऊं किसमें, ज़ाइलिन, मिनरल ऑयल या एटीएफ। एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन में ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसे बोलते हैं एटीएफ, वो यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे सॉल्वेंट्स अवेलेबल है ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए, वो इसमें यूज कर सकते हो डाइल्यूशन के लिए। और इम्पोर्टेंट बात, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को बताना पड़ता है कि कितना कितना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रीडिंग 10 ppm आता है, आपको मालूम है, तो आप क्या बनाओगे, एक लीनियरिटी बनाओगे 5, 10, 15 की, और वो लीनियरिटी उसको रन करके दिखाओगे तो उसमें स्टोर हो जाएगा। आप जब भी उसको रन करोगे सैंपल को, तो उसके बीच में जो भी इंटेंसिटी आएगा उसके कैलकुलेशन से वो आपको अननोन का रिजल्ट देता है, जैसे हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अरे तुम लोग आज मौन रख लिया क्या तुम लोगों ने, वो साइड के लोगों ने? एक ने भी क्वेश्चन पूछा नहीं, आंसर नहीं दिया। एक क्वेश्चन पूछो कोई भी उधर से। सर कॉस्ट बता प्रैक्टिकल के लिए वो सब इनको क्या, इनको टेंशन आ रही है। पता तो होना चाहिए। See, it has a different configuration. The cost will fluctuate accordingly. So, cost starting basic instrument 45 लाख से चालू होता है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं, एक्सेसरी चेंज होते हैं, तो 50-60 आगे बढ़ते जाता है। ICP-MS है? MSP है। Anything else? So, Sir, I please invite both of you to please have a seat on the dais. Thank you, sir, for your valuable guidance and sharing your insightful knowledge with us. Now I request Chairperson, sir, Mr. Rohan Pawar, sir, to please felicitate the speaker, Mr. Deepak Sharma, sir, with certificate and memento. Extremely sorry, please conclude the session. Rohan, sir, please conclude the session. I hope everybody must have understood like whatever sir has tried to deliver. You understood or not? Sir, first of all, thank you for this wonderful session and making students comfortable with their daily examples like fish and blood. Some of the regulatory bodies were discussed like BIS and FSSI. The way you have presented with the videos, so their daily examples, and overall the presentation, that was excellent. Most important thing is that we should understand that like why the session was there and what are the applications of this technique, how it is affecting in our daily life. It seems very easy. I remember my pharmacology lecture, Attarne madam used to be there. She used to teach us
asavas, different asavas, bhasma, and my life's first project was on some kankasav, if I remember. So many times what happens that is like there are many regular things which we do unknowingly, which we don't understand. Let me give you in Marathi simple example. आपण ज्यावेळेस मंदिरात जातो, मंदिरात गेल्यानंतर एखादी अगरबत्ती लावलेली असते, तिचा अंगारा आपण कपाळाला लावतो आणि थोडासा जिभेला चाटतो. इफ आय एम नॉट रॉंग, मॅडम मी बरोबर बोलतोय की नाही माहीत नाही, मी नॅचरल स्पीकर आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, हजारदा इथे येऊन गेलो. ते लावण्यामागचा उद्देश असा असतो की त्यातले जे काही मेटल्स आहेत ते इन सर्टन क्वांटिटी दे शुड गो इनसाइड युअर बॉडी. बरोबर आहे हे मी बोलतोय. आणि आपली बॉडी सुद्धा जशी आपण म्हणतो की मातीपासून बनलेली आहे, त्याच्यात काही मेटल कंटेंट्स पण असतात. देर इज फ्यू क्वांटिटी ऑफ सर्टन गुड बॅक्टेरियाज अँड ऑल दिस मायक्रोबियल फ्लोरा अँड ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर इसेन्शियल थिंग्स. ओनली द पॉइंट इज दॅट की वाय दिस टेक्निक इज इम्पॉर्टंट, जस्ट बिकॉज की जसं आपण मेडिसिनल लँग्वेजमध्ये म्हणतो की एव्हरी मेडिसिन रादर वी आर कन्झ्युमिंग अ केमिकल, but when it is taken in with certain quantity, it is acting as a medicine, otherwise it becomes poison. Likewise, these metals are there. Like metals एवढ्या important पद्धतीने आपल्या daily life वर effect आणि affect करत असतात. And the very best and the famous example is nothing but the Maggi. And 5 वर्षापूर्वी मॅगीचा जो किस्सा झाला होता, जे सगळ्यांचं लोकप्रिय, इस्पेशली हॉस्टेलाइट्सचं लोकप्रिय फूड आहे. सो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ आर्सेनिक, राईट? ओके. सो दॅट लेड अँड आर्सेनिक इम्प्युरिटीज वेअर फाउंड अँड दोज वर गेटिंग एंटर्ड इन टू द लाईक जे इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे वगैरे वगैरे, एन नंबर्स ऑफ सोर्सेस वेअर देअर की ज्याच्या थ्रू ते आलं आणि ते कालांतराने सापडलं. अँड देन later on there are few what I could say fertilizers, pesticides, and especially export होतात आणि त्याचे काही रेसिड्युअल कंटेंट्स सुद्धा फाइंड आउट करायला लागतात, इस्पेशली वेन वी आर एक्सपोर्टिंग इन टू दी युरोपियन मार्केट. सो दॅट्स वाय आय आज लाईक किती मिनिमम लेवल आपण त्याची अनालाइज करू शकतो. आणि या सगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने दिस टेक्निक इज दॅट इम्पॉर्टंट अँड वी शुड अंडरस्टँड लाईक it is ultimately affecting on your like slow poisoning चं काम हे करता हळूहळू, आणि it is affecting on your different systems like मग ते CNS असेल, CVS असेल, मेमरी लॉस, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम्स वर काही त्याचा परिणाम होतो. बट इट इज अ काइंड ऑफ स्लो पॉइझनिंग इफ इट इज इग्नोर्ड. अँड दॅट्स वाय आय वुड लाईक टू थँक Dr. Sharma again, Mr. Sharma again for this wonderful session, and I hope all of you would take it positively and would definitely think of it. And sir, thank you again for arranging such kind of program and giving me this opportunity to conclude the session. Thank you for your patience. Thank you all of you. Thank you. Thank you sir for your remarkable work. Now I request Chairperson Mr. Rohan Pawar sir to please felicitate Speaker Mr. Deepak Sharma sir with certificate and memento. Thank you sir. And now I request Dr. Vaishali Rakibe ma'am to come up on the dais and please felicitate the chairperson sir with certificate and memento. Thank you ma'am. Thank you sir. I further hand over this session to Ms. Vedika Bhor. I request everyone to take a break for 2 minutes.
A very delightful evening to all the curious minds gathered here. As we draw the curtain on this session on cutting-edge innovation and research, let us carry forward the spirit of discovery and creativity. As we conclude this insightful session, let us remember that today's ideas are the foundation of tomorrow's breakthroughs. May the spirit of innovation and research continue to guide us forward. Let us express our heartfelt gratitude with a huge round of applause for our esteemed speakers whose insights truly made this session enriching. Your presence, thoughtful attention and enthusiasm truly reflect the spirit of learning and innovation. We celebrate you today. Thank you for being such a wonderful audience. As a token of our As a token of our appreciation and gratitude for the valuable insights shared today, I would like to request our Vice Principal, Professor K.B. Erande sir, to kindly felicitate our esteemed guest for today, Dr. Rohan Pawar sir, Director of RAP Analytical Research Private Limited, Nashik. I would also request sir to felicitate our guest for today, Mr. Deepak Sharma sir. Thank you so much sir. To give us an overview of the activities and highlights of this national workshop, I would like to invite our co-convener for national workshop and HOD of Pharmacognosy, Dr. J.Y. Nete sir, to kindly present the workshop report. Thank you, Vedika. Respected chief guest, our distinguished alumni, Mr. Rohan Pawar, Director of RAP Analytical, Mr. Deepak Sharma, Mr. Erande sir, Dr. Attarde madam, and faculty members and dear participants. A very good afternoon to all. It is my great privilege to present the report of 2 days national workshop on cutting edge research and innovation in pharmacy, organized by our college, which is sponsored by Savitribai Phule Pune University under the Quality Improvement Program. This workshop was organized with the initial objective of the enhancing knowledge and research skills of the students, faculty members and researchers also. This workshop began on 9th March 2026 with registration and breakfast followed by the inauguration ceremony. The ceremony was graced by Honorable Dr. Harish Shadke sir, Chief Guest Honorable Rajesh G. Shinde sir, Honorable Dr. B.S. Yadav sir. The dignitaries motivated the participants and emphasized the importance of innovation and research in pharmaceutical education. The first technical session was delivered by Mr. Gaurav Tomre, Application Chemist, Ancrom Enterprises Private Limited, on the topic HPTLC and its role in various fields. He explained the principles, instrumentation, workflow, and diverse application of HPTLC, highlighting its importance in pharmaceutical quality control, herbal drug analysis, also food testing, and forensic investigations. The second session was conducted by Ms. Monali Kadu madam from Agarkar Research Institute Pune, HPTLC Revolution, Extraction Techniques, Fingerprinting for Herbal Authentication, and Pharmaceutical Quality Control Applications. She explained traditional and modern extraction techniques
and demonstrated the role of HPTLC fingerprinting in authentication and quality control of herbal medicine, including some case studies. In afternoon session, participants attended a demonstration on HPTLC, followed by a poster presentation competition, where near about 35 participants presented their innovative research ideas. The day concluded with the enthusiastic participation and valuable academic interaction. The second day, means today, began with the session by Dr. Shambabu Prasad, Research Officer, CCRAS, Kolkata, on the topic pharmacognosy in the era of evidence-based medicine. He emphasized the scientific validation, standardization, and regulatory aspects, one herbal drug, one standard, and highlighted the importance of pharmacognostic evaluation technique and advanced analytical method in herbal medicines. The fourth session was delivered by Dr. Harun Patel, Professor and Dean of Research at R.C. Patel IPER Shirpur, on in silico approaches in herbal drug discovery. He explained computational tools such as molecular docking, virtual screening, pharmacophore modeling, and ADMET prediction. Following the lunch break, participants observed the final technical session by Mr. Deepak Sharma, Product Manager of Lab India Analytical Instrument, on metal analysis by ICP OES. He explained the working principle, instrumentation, and some application of ICP OES for detecting the trace metals. The workshop witnessed active participants from the students, faculty members, and researchers from various institutions. The poster presentation competition provided a platform for young researchers to showcase their work and interact with the evaluators and experts. Throughout the workshop, the session was highly interactive and informative, enabling participants to gain exposure to the modern methods of analysis, computational drug discovery approaches, and advanced research methodology. I take this opportunity to express our sincere gratitude to Savitribai Phule Pune University and the management of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, our respected resource persons and organizing committee members, faculty, student volunteers, and all participants for their support and the cooperation. With this, I conclude the report of 2 days national workshop on cutting edge research and innovation in pharmacy. Thank you very much. Thank you so much, sir. To recognize the efforts and achievements of our talented participants, I would request Dr. Surana sir to announce the winners for poster presentation. Good evening to all dignitaries on the dais, and dear delegates. Now we come to exciting moment of our workshop, the announcement of Best Presentation Award. We received several excellent poster presentation, and evaluation committee had challenging task to select the winners due to the high quality of research and innovative ideas presented by the different participants come out from the different areas. I request the winner to kindly come forward to receive the award. Before that, I request to dignitaries on the dais to hand over the awards. Sir, please. Consolidated prize goes to poster number 19, presented by Sayyid Laiba Yevle Sakshi Chotre Madura and guided by Pawar Ashish from MGV College of Pharmacy.
Awards consist about the certificate and cash prize rupees 1000. Another consolation prize goes to poster number PH8 Monali Kadu, Hemlata Kotkar and guide Ritesh Kumar Chaudhary from Agarkar Institute, Pune. Awards with certificate and cash prize 1000. Third prize goes to poster number PH20 Shinde Shivani, guide Narkhade Minal. Second prize goes to poster number PH28 Navle Rani Beauty Devasri, guide Shinde Nirmala from SLBD College of Pharmacy. While first prize goes to poster number PH27 by Harsha Narkhade, guide Dr. Avinash Jake from SLBD College of Pharmacy. She is also alumni of MGV Pharmacy College. Thank you, sir. Congratulations to all the winners and helpful appreciation to all participants for their valuable contribution. Thank you. Thank you so much, sir, and huge congratulations to winners. Feedback is an essential part of learning and improvement. I now invite our delegate, Dr. Harsha Narkhade ma'am, to kindly share their valuable oral feedback regarding the session. Very warm good morning to one and all present over here. Respected dignitaries on the dais, Erende sir, Nehte sir, Sharma sir, Attarde madam and Pawar sir, respected my teachers, colleagues and dear students. It was a great time to visit my own college, MGV. From long back, so many years I visited this, so I found huge changes in the college. So I would like to congratulate the team MGVs for this achievement. Regarding the 2 days workshop, that is cutting edge research and innovations in pharmacy, sponsored by SLPU. It was a great interactive sessions which was conducted
from last 2 days. The first session conducted by Kadu Madam and Gaurav Thomre sir on HPTLC, followed by hands-on session, hands-on workshop, which was very good. Today we had very drastic different topics which we have listened from different esteemed speakers. First one we have listened to Dr. Sham Prasad sir. He highlighted on herbal medicines and their authentication, followed by Dr. Arun Patel on docking, how we are going to use the docking studies on the herbal and medicinal plants. And the last session, which reminds me, the Tambe sir was sitting, and I reminded that Tambe sir was in the third year B Farm. He has explained all this, so it is a reminding of all the session which was covered by the Sharma sir. So thank you once again for this interactive session. So I congratulate all MGV team and organizers for the successful workshop. Thank you. Thank you so much, ma'am. I now request our esteemed delegate, Ms. Smita Sheke ma'am, to kindly come forward and share their thoughts. Respected dignitaries and esteemed faculty members and dear participants, I am also alumnus of this college, and I am very glad to stand before my own teachers. Thank you all the teachers. And talking about the workshop, everything from the schedule to the quality of a session was selected with the great care, and they have taken care that all participants should have meaningful and enrichment in their experience. And obviously this is what MGV is known for, quality and discipline, which we evident from the last 2 days. Next, talking about technical session, they were extremely good and will be very informative and helpful for us. And demonstration also were good for the student point of view. Now, I will take a moment to acknowledge the hospitality we received from last 2 days. And I appreciate the way that lunch is given so that time is saved and more time is given for the sessions. Time is utilized, obviously. Then lastly, I will congratulate the student volunteers. I really appreciate you people. Your tireless efforts behind the scene and obviously on the stage were seen, and obviously you added energy and force and obviously enthusiasm to the programs, and which is required for successful of such programs in academic institutes. So ultimately, overall program was meaningful, which is a very good experience for us. And I congratulate all the conveners, coordinators, organizing team and faculty members for success of the workshop. Thank you. Thank you so much, ma'am. To recognize the enthusiastic participation of our delegates, we will now begin with the certificate presentation. I request our guest for today, Dr. Rohan Pawar sir and Mr. Deepak Sharma sir, to kindly present the certificates. I request Ms. Rani Navle ma'am to come forward. I request Bangar Priyanka to come forward. I request Sonavne Amruta to come forward. Now I request Harsha Narkhede to come forward. I request Devashri Bhutte to come forward. I request Raizade Meghna to come forward.
Gratitude is the fairest expression of appreciation. I now request our co-convener and HOD of Pharmacognosy, Dr. J.Y. Nete sir, to kindly come forward and deliver vote of thanks. Respected chief guest, distinguished resource persons, honorable management members, respected principal sir, faculty members, participants and dear students. A very good evening for everyone. It is a proud privilege to propose the vote of thanks on this occasion of valedictory function. First and foremost, I express my sincere gratitude to our chief guest, Honorable Dr. Harish Adke sir, Vice President of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, for gracing this opening ceremony function. I am thankful to Dr. Rohan Pawar, Deepak Sharma sir for their presence for the valedictory function. I would like to also extend my heartfelt thanks to Rajesh Shinde sir, our CDC chairman, Honorable Dr. B.S. Yadav sir and Dr. Bhambar sir for their presence for the opening ceremony. My sincere thanks goes to our respected resource person, Mr. Gaurav Thomre, Ms. Monali Kadu, Dr. Shambabu Prasad, Dr. Harun Patel sir, and Mr. Deepak Sharma sir, for delivering such enlightening and informative sessions. I would like to express my special gratitude to Dr. Isa Tambe sir for their guidance and support in organizing this workshop successfully. He is not present for this ceremony because he has meeting with the management. I also extend sincere thanks to organizing committee members, faculty coordinator and staff members who work tirelessly behind the scene to ensure the smooth execution of this two-day event. A special appreciation goes to students, volunteers and anchors, particularly Ms. Vedika and team, and technical activity coordinator Mr. Shams and team for their excellent coordination and enthusiastic support throughout the workshop. I would also like to thank all the participants and delegates who actively attended the session, participated in poster presentation and contributed to the academic discussions, making this workshop truly interactive and successful. Finally, I express our sincere gratitude to Savitribai Phule Pune University for sponsoring and supporting the workshop under Quality Improvement Program. With the collective efforts and the cooperation of everyone present here, this workshop has truly become a meaningful platform for the learning, innovation as well as collaboration. Once again, I thank each and every one of you for your valuable presence and contribution. Thank you all. Have a pleasant evening ahead. Thank you. Thank you so much, sir. To conclude this program on a patriotic note, I request to kindly stand for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक
नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much everyone. The rest of the certificates for delegates you collected from our organizing team. Demonstration for lyophilizer is in the instrumental lab and height is also there. Please take it. Good afternoon everyone, myself Shinde Smita. So here we are to give a demonstration of the lyophilizer. The basic definition of the freeze dryer is to
remove the moisture by the process of the sublimation and the freezing to preserve the heat sensitive materials. This process is known as the lyophilization. So this device is also called as the lyophilizer. Here we have the Martin Christ lyophilizer, which is the model of Alpha 24 LD+. So let's see the basic parts of this lyophilizer. This is the quick seal valves. It is always closed to prevent the entrapment of the air in the product. So this is the lyophilizer chamber. It has a 3 section. Any of these 3 section we can put our product in the petri dish, and here we put our product in a flask. So this is the ice condenser. Ice condenser should always be at a room temperature, that is the 21 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. And this is the vacuum pump. This vacuum pump before starting it is always at a 760 torr. After starting it will be goes from the 0 to 400 torr. We cannot use the methanolic extract for the lyophilization and for the freeze drying because this oil will be get corrosive or the pump get damaged due to the methanolic or alcoholic extract. So our basic application of the freeze dryer used to preserve the biomedical devices, vaccines, blood products, etc. And also the increase the solubility of the product. It gives the dry stable powder. So let's see the stages of the drying. Always freeze the sample at the -40 degrees Celsius to -20 degrees Celsius up to 36 hours. It is mandatory. Then goes for the drying. Drying mainly based on 2 techniques, that is the absorption and the adsorption. Absorption means the removal of the moisture or the water or the XY particle from the product. Then the adsorption means the removing of the water molecules by the providing the heat. This Martin Christ freeze dryer is based on the absorption technique because it does not have a facility to provide the heat. So let's understand. Always main switch on, then on this switch, then you will get the ice condenser temperature. As I told that it should be always at a room temperature. So let's check, is it at room temperature or not? And then there are the 2 options, mean and mode. Choose mode option and then warm up the product for at least 3 minutes. It is mandatory. Then goes for the drying. So drying are of 2 stages, that is the primary drying and next is the secondary drying. Primary drying is also known as the main drying, where the ice crystals are directly converted into the vapor through the process of the sublimation. Here 85 to 90% water will be the removed. Then next is the secondary drying. Secondary drying is also known as the adsorption stage. It is the final drying. In this the 1 to 3% water will be the removed and the temperature gradually increases. With maintaining the vacuum and we get the dry stable powder. So precautions should be taken. Always on the AC before starting the freeze dryer. It is a mandatory. Next thing, should not open the valve during the freeze dryer. After starting the freeze dryer, then should check this valve always be closed to prevent the entrapment of the air, and the knob should be slowly turned to release the vacuum. Next session I hand over to my colleague Komal. Thank you, Smita. Myself Komal Devande. We will discuss the demonstration of freeze dryer lyophilization. Firstly, switch on the AC to maintain the control the temperature to operation the instrument. Then drainage of the water. Firstly, drain the water from this drain wall to ensure that the instrument is clean and dry to ready. Then close this valve. Then switch on the initial window. Then release the vacuum from this knob.
check the stall. Milk, coconut water and the extract. 3 samples we are keeping for the freeze drying. And after freeze drying, we are getting the powder like this. Milk powder. The milk sample is in the form of frozen or ice form. Keep this inside. This is milk sample. This is the drug sample, cereally. And this is coconut water sample. Then close the chamber. Then close the valve and start. This is ice condense temperature. Then mold. Then warm up the 3 minutes for that. Warm up. 3-minute warm up. Then after the warm up phase, then change the phase.
Now we'll take time 3 minutes. Then second step is the main drying for 2.5 hours. After that, this main drying, the ice is directly converted into vapor form without going to liquid form. Then after that, the third step is final drying. In that final drying, the moisture content in that is removed and the final powder form is ready. In that after that, close the instrument. The standby mode is done. This is the dry powder sample of milk. Then after that, for standby mode, remove the valve. And switch on the button. वो पाउडर दिस इज द पाउडर एक्चुअली तो उसने किया था ना मिल्क सैंपल है हाँ नहीं रे मिल्क सैंपल वी आर कीपिंग देयर एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द पाउडर मतलब फूड में भी यू नो द एप्लीकेशन The application of the lyophilizer of this dryer, it is in the blood component, crude drug extract powder in that powder form, and also in that biological compound. So we are getting here the fatty powder. We are getting the porosity it will get increases. So as the porosity get increases, the solubility again it get increases. So it has the wide application in the nanotechnology also. So as it is the old model, so that's why here directly we are not utilizing the heat. Directly your sample it is to be get converted into the powder form by the process of sublimation. But in new model, both the forms again it is available. मॅम जे हर्बल एक्स्ट्रॅक्ट असतात थोडेसे मिक्समध्ये डिग्री करतात आणि थोडंसं लिक्विड आहे मग ते पण याच्यामध्ये तो आता एक ठेवलेलं आहे बघा तुम्ही यू कॅन सी या म्हणजे वन इज द पावडर कोकोनट extract and after drying this is the powder actually we are getting for the milk म्हणजे fine आणि porosity it is more. तुम्ही असंच एक्सट्रॅक्शन करताना ते शेवटपर्यंत थोडं स्टिकीच राहतं तसं येतात ते बऱ्यापैकी फक्त सायकल डिसाईड करावं लागतं ड्राईंग सायकल प्रत्येकाची व्हॅरी होते आणि त्याला तुम्हाला ट्रायल एरर बेसिसवरच करावं लागतं नंतर तुम्हाला त्याचं पर्सेंटेज किती त्याला किती वेळ केले त्यानुसार चेंज होतं आणि मॉडेल टू मॉडेल व्हेरिएशन्स आहे त्याची आईस कंडेन्सर कॅपॅसिटी किती आहे त्याच्यानुसार याच्या सगळ्या मॉडेलमध्ये साधारण 4 ते 25 kgचे आहेत मॉडेल यातलं बेसिक आधी येतं SPC बेसिक आणि त्याच्यानंतर पुढे हे ॲडव्हान्स मॉडेल प्लसवालं तर मगाशी तुम्ही एरर बघितला असेल ॲक्च्युली तिथनं ते रिलीज नव्हतं झालेलं आहे मी फुल रिलीज केलं मग मी रिमूव्ह द चेंबर आणि प्रत्येक वेळेस करावं लागतं हां अदरवाईज यू कॅन कीप द वायर म्हणजे दुसरं ऑप्शन पण आहे आपल्याला प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक सायकलच त्याची अशी असते 5-5 दिवसाची सायकल असते एकदा लावलं तर 5 दिवस चालतं सगळ्यात सोपं फक्त मिल्कची जी आहे ती 6 तासात होते 6 तासात ती झालेली ॲक्च्युली ती जी मी केली आणि एक्स्ट्रा सपोज आता तो व्हायला किती वेळ लागला तो कमीत कमी तुमचा किती वेळ लागला त्यांचं मेन ड्राईंग 2.5 तासाचं असतं त्यानंतर चेक करायचं झालंय की नाही कंटिन्यू ठेवायचं नाहीतर थोडं बाकी असेल तर फायनल ड्राईंगला जायचं
फायनल रँक ही 1.5 तासाचा असतो. सॉल्व्हंट कुठला आहे त्याच्यावर. ॲक्वेस असेल तर साधारणतः एक 12 तासाची सायकल त्यात होतं. जर इतर कुठला सॉल्व्हंट असेल तर 2 प्लस. त्याला मग हा पंप जो आहे कोरिजन प्री पंप आहे हा चालेल, पण बाकीचे मॉडेल चालत नाही. ॲक्वेस मॉडेलचं टेम्परेचर -55 वगैरे जातं, हे -85 पर्यंत जातं. -85 to 105. आणि 4 kgच्या वर त्याची कॅपॅसिटी आहे, कंडेन्सर कॅपॅसिटी. म्हणजे आर्किटेक्चरचा कॉईलचा सरफेस एरिया कंडेन्सरचा ते 4 kg वॉटर वेपर्स म्हणजेच आईस होल्ड ट्रॅप करू शकतो. त्याची आईस कंडेन्सर कॅपॅसिटी. त्याचं कुठे आहे काढून थोडं एक युनिट हे युनिट आहे. एवढे अँपूल आपण या ट्रेन लावू शकतो. म्हणजे तिथे फिट करताना फक्त एवढं युनिट आणि इतके अँपूल खाली लावू शकतो. म्हणजे काढायचे ते अँपूल आणि अँपूल याच्यामध्ये फिल्टर असतं एक ते. हे 24 किती आहे? 16. आणि इथे लावू शकतो. इथे कुठे लावू शकतो आपण? हो हो डायरेक्ट त्याचं गन असते त्याची. आणि तुमचं ड्राय झालं की त्याला दुसरीकडे कॅरी करणार, कंटामिनेट होणार, तसं काहीच नाही. जागेवरती. आणि असे फ्लास्क पण लावू शकतो. फक्त बघू शकतो ती डायरेक्ट आपण ॲडजस्ट करू. म्हणून त्याची कॅपॅसिटी आता जर असे जर आपण सगळीकडेच लावले तर वॉटर वेपर्स किती होते? ती कॅपॅसिटी म्हणजे 4 kg खाली कंडेन्सरची. टोटल कॉस्ट सांगितली 12 lakhs त्याची कॉस्ट आहे. पंपची कॉस्ट साधारणतः 3.5 lakh. प्रोव्हिजन फ्री हा स्पेशल पंप असतो. बाकी मेजर सर्किट किट असतात ते पण जवळजवळ 2 lakh आहे. तुम्हाला काही क्वेरी अजून? चालू करून टाकलं करायचं केलं होतं ना. ते मोड केले ना. मेन ड्राईव्ह, प्री ब्रिजिंग, स्टँड बाय ते दाखवलं. हो ते दाखवलं. थँक्यू.